थल सेना प्रमुख जनरल नरवण ने चीन के साथ खराब होते रिश्तों के बीच एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी देश के साथ लड़ाई या संघर्ष आखिरी उपाय होता है, लेकिन हमें लड़ने को बाध्य किया गया तो जंग हम ही जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के उत्तरी इलाकों में अपने कुटिल पड़ोसियों से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अपग्रेड करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगातार और व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके तहत रोड, सुरंग, रेलवे लाइन और अतिरिक्त पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलों की मरम्मत, सप्लाई, ईंधन और हथियारों के भंडारण के काम भी किए जा रहे हैं। Well and under control. As I mentioned, that talks are underway, and while the talks are underway, there is always hope that through dialogue we will be able to resolve our differences. What happens and whether a situation escalates or not is very difficult to foretell or to predict. But with whatever we have done so far, we are in a position to meet whatever is thrown at us in the future. And of that, I can assure you very confidently. And war is always, or conflict is always an instrument of last resort. But if resorted to, we will come out victorious. जनरल नरवण ने इसके साथ ही चीन के नए सीमा कानून को सिरे से खारिज कर दिया। उस कानून के आधार पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय इलाकों पर अपना अधिकार जता रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार न करते हों। This new border law is concerned, I think our MEA has made it abundantly clear that this law will have no bearing on our bilateral relations and that we do not accept it as such. We have many other agreements and protocols which predate this new law which they have passed, and any law as such which does not have which is not binding on other countries and which is not legally tenable and is not in keeping with the agreements that we have had in the past, obviously cannot be binding on us. As far as the military ramifications are concerned, we are still looking into that aspect. But should there be any military ramification and should there be any likely fallout in the military domain, as I've said, that with whatever steps we have taken and the rebalancings that we have carried out, any such fallout, I think we are more than adequately prepared to deal with it. आर्मी चीफ ने इसके साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगती देश की पश्चिमी सीमा पर चरमपंथियों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा की इस ओर घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। Western front along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our Western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us.